Namaskar children, welcome once again in your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths chapter 5 arithmetic progressions. We have now completed the first 8 questions of exercise 5.3. Today in this video we will take up question number 9 to 13 from the same exercise. Before we start, let us once again revise the formulae that we have learnt in this chapter. We know that for an AP with first term A, common difference D and last term L, the general nth term is given by an equal to a plus n minus 1 into d. Also the nth term from the last term is given by L minus n minus 1 into d. We also know that the sum of first n terms is given by either of these three formulae, and depending on the information given in the question, we select one formula out of these three formulae. If we know the first term and the common difference, we take up this formula. If we know the first term and the nth term, we select this one, and if we know the first term and the last term, we select this formula. Also remember that the sum of first n positive integers is given by n into n plus 1 by 2, and the general nth term an is also given by this relationship Sn minus Sn minus 1. Here we are connecting the nth term with the sum of first n terms using this formula. So, with the help of all these formulae, we will be doing question number 9 to 13 in this exercise. So, begin with 9th question and keep your pen and paper ready with me and join me. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. So, first of all, let us write whatever has been given in notation form, and then only we will be able to decide how to proceed in this question. Let us write the given work. Whatever has been given, let us write it. The sum of first 7 terms we denote it by S7, and this is given equal to 49. Also, we have been given sum of first 17 terms. We denote it as S17, and this is equal to 289. Now, we have to find the sum of first n terms, which we denote by Sn. Now, just looking at these two relationships, we can easily tell what should be the sum of first n terms. Just have a look. S7 is equal to 49, and 49 itself is 7 square. So, S7 is nothing but 7 square. Similarly, S17 is nothing but 17 square, which is equal to 289. And from here, we can infer that the sum of first n terms should be equal to n square. And now let us do some calculations and verify whether we get this result or not. Here we begin the solution. We don't know the first term and the common difference. Whatever has been given, let us have a look. S7 and S17. S7 के लिए हम sum of 7 terms का formula लगाते हुए इसको expand कर लेंगे और एक equation मिल जाएगी. इसी तरह से S17 के लिए भी हम formula लगाते हुए expand कर लेंगे और एक और equation मिलेगी. तो यहाँ से हमें 2 equation मिलेंगी जिन्हें हम आगे solve करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है. We write here, let the first term and common difference of the AP be A and D respectively. Okay, then the sum of first n terms, it is given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. And here we have been given S7. So, taking n equal to 7, we get S7 as 7 by 2 into 2a plus 7 minus 1 into d, and its value has been given equal to 49. So, equal to 49. Now, simplify. This will give us 7 by 2 into 2a plus 6d equal to 49. Here we can take the common number out, 2a and 6d. Here they both are multiples of 2. So, we can take 2 out as the common number. This can be written as 7 by 2 into 2, and what will be inside? देखिए 2 तो बाहर आ गया तो a अंदर रहेगा,
plus, here we have 6, 2 3s are 6, so here we will write 3 and a d also. This is equal to 49. Now we can easily divide 2 and 2 and cancel them. This will give us a plus 3d equal to 49 and bring this 7 to the RHS. हमने ट्रांसपोज कर दिया 7 को RHS में, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में ये डिवीजन में चला जाएगा. Here we have a plus 3d equal to 7 again. 49 by 7 is 7. This is the first equation that we are getting. Interesting, isn't it? Next we take up S17. Again we will have one equation and then we will be solving the two equations. We take the next page. S17. This can be written as 17 by 2 into 2 into a plus 17 minus 1 into d. We don't know the values of a and d, and this is equal to 289 as given in the question. From here 17 by 2, 2a plus this will be 16d equal to 289. Again take out 2 as the common number. So this will become 17 by 2 into 2 and what will be inside? 2 तो बाहर आ गया, a अंदर plus 2, 8 is 16, so 8d. This is equal to 289. Now we can cancel this 2 by 2 and we will have 8 plus 8d equal to 289 upon 17. ये 17 को हमने RHS में भेज दिया है. This gives us a plus 8d equal to 17 because 289 upon 17 is 17. So this is the second equation. Now we have got both the equations. This is a plus 8d equal to 17 and here we have a plus 3d equal to 7. Both these equations we have a here with कोएफिशिएंट 1. दोनों में केस में कोएफिशिएंट 1 है तो इजीली हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हुए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं. आप देखेंगे इक्वेशन 1 में नंबर्स छोटे हैं और इक्वेशन 2 में बड़े हैं. सो वी शुड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. लेट अस राइट हियर. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. We get, let us write first a plus 8d equal to 17 and here we will have a plus 3d equal to 7. ठीक है, दोनों इक्वेशंस लिख ली. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा. बॉटम इक्वेशन की सभी टर्म्स का प्लस से माइनस हो गए. a minus a will be cancelled. 8 minus 3 it is 5 and d also. Here 17 minus 7 it is 10. This gives us d equal to 10 upon 5 or this is equal to 2. So from here we get the value of d equal to 2. Next what? We will have to find the value of a. How to find it? Substitute this value of d in either equation 1 or in equation 2. I am writing it here. Substituting d equal to 2 in equation number 1. We get equation 1 is a plus 3d equal to 7. ठीक है. Now a plus 3 into d is 2 equal to 7. a plus 6 equal to 7 or a is equal to 7 minus 6. a is equal to 1. Now we have got the values of a also and d also and now we can easily find the sum of first n terms. We take the next page. Now Sn is given as n by 2 into 2a plus n minus 1 into d and now we will place in the values of a and d. 2 into a which is 1 we have found it plus n minus 1 into 2. The value of d we have found it to be 2. Just have a look. d is 2 and a is 1. तो वही values हमने यहाँ इक्वेशन में रख दी हैं. This gives us equal to n by 2. Here we have 2 ones are 2 plus 2 को multiply कर देते हैं दोनों ही नंबर से. 2 into n will be 2n and 2 into minus 1 will be minus 2. In the bracket we can cancel 2 minus 2. We will be left with n by 2 into 2n. Again we can cancel 2 by 2 and this is equal to n into n or
this is equal to n square, and this is what we could see in the beginning itself. Here have a look. I told you in the beginning the sum of n terms should be n square looking at these two informations, and so we are getting after these calculations the sum of first n terms equal to n square. Okay, I hope it is clear. Next we take question number 10. Show that A1, A2, A3 and so on, An and so on form an AP where An is defined as below. An equal to 3 plus 4n, and also we have been given An equal to 9 minus 5n. Also in the question we have been asked to find the sum of first 15 terms of the AP so formed. So let us do it here. We take the first case. Taking different values of n, 1, 2, 3, 4 and so on. Taking all these different values of n, we can get the different terms of this AP, A1, A2, A3 and so on, An and so on. We get A1 equal to 3 plus 4 into 1. An क्या है हमारा? 3 plus 4n. तो n की जगह हम जब 1 लेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, n की जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी, n की जगह 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, इसी तरह से हमें सभी टर्म्स इसकी मिल जाएंगी. सो बाय टेकिंग n इक्वल टू 1 वी गेट इट 3 प्लस 4 इंटू 1. पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में प्लस करेंगे. दिस विल बी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7. देन A2, दिस विल बी 3 प्लस 4 इंटू 2. दिस विल बी 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, it will be 11. Then third term के लिए we will take n equal to 3. तो समझ रहे हैं आप कि कैसे हमें n की अलग अलग वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 रखते हुए अलग अलग टर्म्स मिल रही हैं इस सीरीज़ की. So we write here 3 plus 4 into 3 for the third term. This will give you 3 plus 3 4s are 12 and it will be equal to 15. इसी तरह से fourth term मिलेगी 3 plus 4 into 4. 3 plus 16 हो गया ये, this is equal to 19 and so on. We can get many terms. Now just have a look at this list. The series obtained is 7, then 11, 15, 19 and so on. This is the series that we get from this relationship. nth टर्म को अगर हम 3 प्लस 4n से डिफाइन करें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई 7, सेकेंड मिल गई 11, थर्ड मिल गई 15, फोर्थ मिल गई 19 एंड सो ऑन. वी कैन गेट द सक्सेसिव टर्म्स. नाउ द क्वेश्चन इज शो दैट दिस इज एन AP. क्या ये एक AP है या नहीं, ये हमें देखना है और इस तरह से हमें शो भी करना है कि ये एक AP है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगातार आने वाली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. अगर वो डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये एक AP है, और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एक AP नहीं है. सो हियर A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ये हो गया 11 माइनस 7, इट इज़ इक्वल टू 4. देन वी फाइंड A3 माइनस A2. देखिए थर्ड टर्म है 15 और उसमें से सेकेंड टर्म माइनस करी तो ये भी आ रहा है 4. नेक्स्ट वी फाइंड A4 माइनस A3. दिस इज 19 माइनस 15, अगेन इट इज इक्वल टू 4. तो आप देख रहे हैं कि लगातार आने वाली दो टर्म्स के बीच में द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इट इज कमिंग आउट इक्वल टू 4 एवरी टाइम, एंड सो दिस इज एन AP. वी राइट इट हियर. Since the difference between any two consecutive terms is same every time, the given list of numbers form an AP. ठीक है, अब ये AP है और ऐसे केस में हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है. हियर वी राइट इट, सम ऑफ
first 15 terms, it will be given by as 15, and this will be equal to 15 upon 2 into 2a plus 15 minus 1 into d. Since the sum of first n terms is given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So, using this formula, we have found that S15 is equal to 15 by 2 into 2a plus 15 minus 1 into d, and this will be equal to 15 by 2 into 2 into a. What will be a here? You can see here first term a, it is equal to 7. देखिए आप 7 ये है, and common difference d, it is equal to 4. 4 का difference आ रहा है तो common difference हो गया 4. तो अब उनको यहाँ रख लेते हैं. 2 into 7 plus 15 minus 1 will be 14 into d, it is equal to 4. Solving this, we get it 15 by 2, 2 7s are 14, 14 4s are is 56. This will be equal to 15 by 2 into, add the two numbers, it will be 10 and 1 here 70. Cancel by 2, it will go 35 times. So, 15 into 35. Multiply the two numbers. 15 5s are 75, 7 carried. 15 3s are 45 and 7, it will be 52. So, 525. This is the sum of first 15 terms in this case. What we did here? We were given one expression for the nth term. हमने n की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हुए इस सीरीज़ की अलग अलग टर्म्स लिखी. देखिए आप n को 1 2 3 4 इस तरह से लेते हुए इस एक्सप्रेशन में रखते हुए मैं फर्स्ट टर्म मिली, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सभी टर्म्स हम ले सकते हैं. हमने 4 टर्म्स निकाली और हमें इससे सीरीज़ मिल गई 7, 11, 15 एंड 19 एंड सो ऑन. अब हमें यहाँ चेक करना है कि क्या ये एक AP फॉर्म हो रहा है या नहीं. उसके लिए हमने लगातार 2 टर्म्स लेते हुए उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया और वो आ रहा है इक्वल टू 4. एंड सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम एवरी टाइम, दिस इज एन AP. और AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया. अब इजीली हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया. वी टेक द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव इट अगेन बाय टेकिंग n equal to 1, 2, 3, 4 and so on. We get the first term a1. It will be 9 minus 5 into 1. n की जगह यहाँ पर हम 1 रखेंगे. This will give us 9 minus 5 equal to 4. Then a2. This will be equal to 9 minus 5 into 2. यहाँ पर अब n की जगह हम 2 रखेंगे. This will be equal to 9 minus 10 equal to minus 1. Then the third term, it will be 9 minus 5 into 3. Third term के लिए n के लिए हम value ले लेंगे 3. This will be 9 minus 15 and this is equal to minus 6. We take one more value. Fourth term will be 9 minus 5 into 4. This will be 9 minus 20 and this is equal to minus 11. So on, we get the series which is obtained as is 4, minus 1, minus 6, minus 11 and so on. Now we will check whether it is forming an AP or not. For this we will find the difference between any two consecutive terms. Here we will find the difference between first and second term, then second and third term, then third and fourth term. दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और अगर ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये एक AP है. लेट अस फाइंड A2 minus A1. दिस विल बी -1 -4. ठीक है, A2 है आपका -1, फिर ये माइनस तो फॉर्मूले का है और A1 है 4. दिस इज इक्वल टू -5. नाउ वी फाइंड A3 minus A2. A3 is -6 minus A2 is -1. This will be equal to -6 plus 1. Minus minus plus हो गया. This is equal to -5. Next we find A4 minus A3. Fourth term it is -11, then minus the third term which is -6. This is -11 plus 6
minus minus will be plus, and minus 11 plus 6 is minus 5. So what do we see? The differences are equal, and so we can write here, since A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, the given list of numbers form an AP. ठीक है, with first term which is given by 4 here. You can see first term is 4 and common difference D, it will be equal to minus 5. देखिए आप, सभी के बीच में difference है minus 5, तो common difference हो गया minus 5. Now we need to find the sum of first 15 terms. Sum of first n terms. First we write the formula. It is given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. Now sum of first 15 terms. It will be given by S15. This is equal to 15 upon 2 into 2 into a. What is the value of a? It is 4. So 2 into 4 plus 15 minus 1 into d, which is equal to minus 5. So here we can write it minus 5. This will be equal to 15 by 2. Here we have 2 4s are 8 plus 14 into minus 5. This will be 15 by 2, 8, and plus into minus will be minus. 14 into 5, it is 70. This is 15 by 2, and here we will have minus 62. ठीक है. Now we can divide 62 by 2. This will be equal to 15 into minus 31. As you can see, on dividing by 2, we get it minus 31. This now on multiplication will give us minus 15 ones are 15. So 5 will be here, 1 carried, 15 threes are 45 and 1 it will be 46. So minus 465 is the sum of first 15 terms in this case. Next we take question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. Here we have been given the sum of first n terms equal to 4n minus n square. ठीक है. अगर हमारी AP है A1, A2, A3, A4, A5 और इस तरह से AN तक मान लीजिए, तब हमारी फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया है 4n माइनस n स्क्वायर. यहाँ हमसे पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. तो आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल होगी फर्स्ट टर्म तक के सम के. आप देखिए फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, इटसेल्फ यही तो होगी फर्स्ट टर्म. तो अगर हम इस केस में n इक्वल टू 1 ले लें तो हमें जो फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा वो एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट टर्म ही होगी. तो यहाँ जब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हुए S1 फाइंड आउट करना होगा. इसी तरह से नाउ वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स. तो जब हम n इक्वल टू 2 लेंगे तो हमें S2 मिल जाएगा और इसमें हमें n की जगह 2 रखना पड़ेगा. उससे हमें फर्स्ट टू टर्म्स का सम मिल जाएगा जो अगर आप देखें तो इन दोनों का सम होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी? यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स. तो कैसे मिलेगी देखिए आप, A1 प्लस A2 ये तो हो गया S2. इसमें से अगर हम ये S1 जो कि A1 और S1 एक ही बात है माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A2 जो सेकेंड टर्म है. लेट अस हैव अ लुक. S2 कैसे मिलेगा, A1 प्लस A2 टू टर्म्स का सम और A1 तो हमारा S1 ही है तो S2 इक्वल टू S1 प्लस A2. अब जब हम इसे LHS में ले जाएंगे तो S2 माइनस S1 से हमें सेकेंड टर्म मिल गई. ठीक है. इसी तरह से अगर हमें
यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म भी पूछी है। अगर हम 3 टर्म्स का सम लें तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये 2 टर्म्स का सम हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू S2 प्लस A3। अब इसको अगर LHS में ले जाएं तो S3 माइनस S2 विल गिव अस द थर्ड टर्म। इसी तरह से अगर हमसे फोर्थ टर्म पूछें तो वो कैसे मिलेगी, S4 माइनस S3, यहाँ जो नंबर है उससे एक कम लेंगे। फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी, S5 माइनस S4। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला है जो अभी हमने स्टार्टिंग में रिवाइज भी किया था। सो आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। Using this formula we can easily find the third term, the 10th term, and finally we will find the nth term. So now let us proceed in this question. Let me erase, or shall I take a new page? Here we have been given sum of first n terms Sn equal to 4n minus n square. This n is in the subscript. इसको साथ में नहीं लिखना है, ये नीचे से लिखना है छोटा सा यहाँ पर, ठीक है। So Sn is equal to 4n minus n square. Now we have to find the first term. Taking n equal to 1, we get S1 equal to 4 into 1 minus 1 square. This is equal to 4 minus 1 equal to 3. Also S1 is equal to the first term. जब एक ही टर्म का सम लेंगे तो अपने आप में वही टर्म तो आएगी, और इसलिए S1 is equal to A1 is equal to 3. तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है। Next we have been asked, let me write it point wise. We have been asked what is the sum of first two terms. So we write here sum of first two terms. It will be given by S2, और उसके लिए यहाँ पर हम n की जगह रख देंगे 2. This will be 2 square here. Let me write it properly. 2 square. We have been using this formula Sn equal to 4n minus n square. तो जब हम sum of first two terms find out कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 4 into 2, n की जगह 2 रख लिया, minus 2 square. This is equal to 8 minus 4 equal to 4. Here we are taking n equal to 2. ठीक है. Now we take the third part. What has been asked? We have been asked what is the second term. Now to find the second term, this will be given by S2 minus S1. अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे. What is S2? It is 4 minus S1. It is equal to 3. So this will be equal to 1, the second term. ठीक है. A2 is equal to 1. This we have found. Then what next? Find the third, the 10th and the nth terms. So we find here the third term, A3. How to get it? S3 minus S2. S3 कैसे मिलेगा हमें? देखिए इस एक्सप्रेशन में n की जगह हम ले लेंगे 3. 4 into 3 minus 3 square. This is S3 minus S2, और S2 की वैल्यू हमारी आई हुई है 4, तो वो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. This is nothing but 12 minus 9 minus 4. 12 minus 9 is 3 minus 4. This is equal to minus 1, which is the third term of this AP. Next we have been asked to find the 10th term. This is the fifth part of the same question. To find the 10th term, we will take it as S10 minus S9, and we know that Sn is given as 4n minus n square. So here to find S10, हम n की जगह ले लेंगे 10. This will give us 4 into 10 minus 10 square. ठीक है, this is your S10. And how to find S9? It will be 4 into 9 minus 9 square. ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखने से हमें S10 मिल गया, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रखने से हमें S9 मिल गया. Now this will be 40 minus 100. This is 36 minus 81.
subtract the two numbers here. This will be minus 60 and here minus 11 minus 6 it's 5, 7 minus 3 it's 4. This is minus 60 plus 45. Minus minus ये plus हो गया. This is equal to minus 15. So this is the 10th term of this AP. Next we have been asked to find the nth term of this AP. For this again we move towards the sixth part. We have been given Sn equal to 4n minus n square. And to find the nth term, we take it as Sn minus Sn minus 1. Now, Sn is given by 4n minus n square. This is your Sn minus Sn minus 1. तो यहाँ पर हम n की जगह क्या ले लेंगे? n minus 1. तो ये मिलेगा हमें 4 into n minus 1 minus n minus 1 whole square. ठीक है, ये हो गया आपका Sn और ये हो गया Sn minus 1. जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने n minus 1 रख दिया है. अब इसको एक्सपैंड करते हैं. दिस विल बी 4n minus n square minus this will be 4 into n. 4n minus 4 into 1 will be minus 4 minus, open up this bracket, first number square plus second number square minus 2 into first into second, so minus 2n. This is the expanded form of this expression. This will be equal to 4n minus n square minus 4n minus 4, now open it, minus n square minus 1 minus minus plus 2n. ठीक है, ये माइनस से इन सब के साइन चेंज हो गए. This again will be equal to 4n minus n square minus 4n, then minus minus plus 4, again we have plus n square minus minus plus 1 and then minus 2n. हमने ये खोल दिया है ब्रैकेट और सबके साइन चेंज हो गए हैं. Now just have a look. 4n minus 4n, it will be cancelled. Then minus n square and plus n square, it will be again cancelled. This is further equal to 4 plus 1, this will be 5 and minus 2n. So this is the expression for the nth term of this given AP. And so we have found all the values. This was question number 11. Next we take question number 12. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. So first of all, let us write all these 40 positive integers which are divisible by 6. We write the list of these numbers. We begin the solution. The list of first 40 positive integers divisible by 6 is, we write this list. First multiple will be 6. Okay, divisible by 6 or multiple of 6 both mean the same here. So it will be 6 the first number, then the next number will be 12. 6 है divisible 6 से, next number है 12 जो कि 6 से divisible है. Next number होगा आपका 18, then the next number should be 24. So what we are seeing, in this way we can get 40 first positive integers divisible by 6. So what should be the 40th term here now? आप देखिए ये कैसे मिल रहा है हमें. This is the first term, this is getting 6 into 1. Here this is the second term और ये कैसे मिल रही है हमें 6 into 2 करके. ये है fourth term, ये कैसे मिल रही है 6 into 4 करके. तो जब हम यहाँ पर 40th term लिखेंगे वो कैसे मिलेगी 6 into 40 करने से हमें इसकी 40th term मिल जाएगी and it will be 240. Is it clear? So you can see here the list of first 40 positive integers divisible by 6 is 6, then 12, 18, 24 and so on till 240. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक AP बन रही है यहाँ पर. Let me erase. Now you will see the difference between any two consecutive terms is same every time and it is equal to 6. तो ये एक AP बन रही है यहाँ पर. ये लिखेंगे हम
This is an AP with first term A equal to 6, common difference ये कितना हो गया देखिए आप, D equal to अगेन 6 का डिफरेंस है. लास्ट टर्म भी यहाँ पर पता चल रही है हमें. लास्ट टर्म इट इज इक्वल टू 240 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑल्सो नोन. द नंबर ऑफ टर्म्स which we denote by n, it is equal to 40, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है कि हम 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं. तो ये एक AP है जिसमें हमें A भी पता है, D भी पता है, L भी पता है और N भी पता है. नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दीज इंटीजर्स. तो सम के लिए अब हमें एक फॉर्मूला चूज करना होगा और बताइए क्या लेना चाहिए. यहाँ हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है. सो ऑब्वियसली वी शुड टेक द फॉर्मूला. लेट अस राइट इट हियर. Sum of these 40 integers, we will find it here. We know that for an AP, Sn is given by n by 2 into A plus L. ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है. सो हियर वी राइट इट S40 equal to 40 upon 2 into A is 6 and L is 240. This will be equal to 40 upon 2 into 246. This is 20 into 246. We can multiply by 2 here. 2 6 are 12, 1 carried. Here we will have 9 and 2 2s are 4 and 1 0. So this is the sum of first 40 positive integers divisible by 6. I hope it is clear. Next we take question number 13. Find the sum of the first 15 multiples of 8. Again first we need to write down the list of numbers. हमें पहले वो numbers लिखने होंगे first 15 multiples of 8 और तभी तो हम उनका sum find out कर पाएंगे. So we start the solution here. The list of first 15 multiples of 8 is, let us write it here. The first number will be 8, then 8 2s are 16, then 8 3s are 24, then 8 4s are 32 and so on. Can we get the last term also? Yes, we can get it by multiplying 8 by 15. ये है आपकी first term. और ये कैसे मिल रहा है हमें 8 into 1 करके, सेम रहेगा यहाँ पर भी. ये है सेकेंड टर्म, ये हमें मिल रही है 8 into 2. देन वी टेक द 15th टर्म एंड वी विल गेट इट बाय मल्टीप्लाइंग 8 by 15 and you will get it as 120. So this is the last term and let us now have a look whether it is an AP or not. And you will see that yes, it is an AP. We can write it here. It is an AP with first term A equal to 8. ठीक है, आप देखेंगे सब में 8 का डिफरेंस है तो AP तो है ही. फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 8. कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बताइए. ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इक्वल टू 8. ऑल्सो वी नो द लास्ट टर्म L, it is equal to 120 and the number of terms which we denote by N, it is equal to 15. I hope it is clear. Next we need to find the sum of these 15 multiples of 8. We write here Sn. Now how to find this Sn? Which formula should we select? Obviously here we know the first term and the last term. And so we should take Sn equal to n by 2 into A plus L, the sum of first term and the last term here. From here we can find S15 equal to 15 by 2 into A which is 8 and L is 120.
This is 15 by 2 into 128. We can divide by 2. One time here, 64. 15 into 64. 15 4s are 60. 6 carat. 15 6s are 90 and 6 it will be 960. So the sum of first 15 terms is 960. I hope the question is clear. Let me remove this from here to get the fair work. And so these were question number 9 to 13 from exercise 5.3. I hope all these questions are clear. You can practice these questions once again. Soon we will meet again with the next questions. Goodbye then.